there, how are you? This is Madhuri Chaurasiya and welcome back in our YouTube channel Madhuri Chaurasiya. In this video, I am gonna share my own experience how you can avoid 6 things in beginner stage. I would like to show there is a huge list of making videos. 6 things I will share in this video how you can avoid if you are able to see. This is my handwriting. इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब बिगनर स्टेज में रहते हैं तो ऐसे कई चीज़ें जिसको याद रखना चाहिए जिससे आप कम समय में अपना टाइम को बचाकर एक अच्छा स्पोकन इंग्लिश आप बोल सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। आप छोटे छोटे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बढ़िया लगेगा बोलने में। तो मैं पहला थिंग है जो मैं बताना चाहूँगी, फर्स्ट tips is that do not think too much to make mistakes. Yes, guys, this is my own experience when I was learning. Yet I'm learning, guys. Yet I'm learning. I'm not thinking I'm expert in spoken English. No, guys. Yet I'm learning. I'm beginner stage, but I'm following some tips and tricks. This is my own experience. First, do not think too much to make mistakes. Yes, guys. Please. It means when you're a beginner, avoid to use advanced words. It's look like dull. Do not think too much to make mistake. Of course, make mistake. Yet I make a lot of mistake, but I feel confident when I make mistake. I avoid to make a lot of mistakes. We know, guys, spoken English is not our first language. This is our second language. We all know very well. So why we feel so afraid when we make mistakes? Why? My question is why? So first thing is that always be confident. Always do not think too much to make mistake. First point is that do not think too much to make mistake. Second thing is that be confident. Always be confident, guys. Always when you speak anything in English, be confident. Yet I make mistake, but I feel confident. I do not think to make too much mistake. I make a lot of mistakes, but I feel confident because I'm learning. This is my learning stage. Second tip is that be confident always to make mistake. And third point is that do not think, guys, what people will say about you, but speak. Yes, guys, I am saying do not think too much about what people will say about you, because this is my own experience, guys. When I started to learn spoken English, my best friend used to criticize me. अंग्रेज की औलाद, ज़्यादा अंग्रेज मत झाट, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ कर गए, like this kind of things I used to think. I used to listen, but now nothing like that. So do not think about too much what people will say, but speak confidently. Because when people will say about you, when people will try to criticize you, that is their work, not your work. That is their work. They will do. Why are you thinking about that too much? It's so simple. Fourth point is that always be proud of yourself, guys. This is my own experience, because if you not believe in yourself, who will believe? If you'll not feel proud of yourself, then who will feel proud of yourself? Be always proud of yourself, guys. Please be always proud of yourself. When you make mistakes, say yes, it's okay, I'm learning, it's okay. Always feel happy, always be happy, guys. It's okay. Always be proud of yourself. Do not criticize yourself. I look like this, I'm not okay, my spoken English is not okay, nothing like that. Please do not think too much about that, okay? Fifth tips is that believe in yourself, guys. Please believe in yourself. Believe me, if you will not believe in yourself, then who will believe? Yet I make a lot of mistakes, but I believe on myself. I will go there. I will reach my aim. I will fulfill my all dreams. Of course, it's okay to make mistake. It's okay, because we know, guys, English is not our mother tongue.
English is our second language, and when we speak second language, when we try to learn second language, this is okay. होगा गलतियाँ, मुझसे भी होता है गलतियाँ, तो क्या मैं ज़्यादा सोचूं? नहीं। मैं वीडियोस बनाती हूँ, अभी गलतियाँ होता है वीडियोस में, मुझे पता है कि हाँ हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, होगा गलतियाँ। एंड प्लीज़ गाइज, अगर होता है गलती कुछ, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बनाना स्टार्ट की, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मदद करूँ, मैं शेयर करूँ कम से कम टाइम में कैसे सीख सकते हैं। Fifth point is that, come to the point, fifth point is that be always believe in yourself. Okay. And sixth point is that take a pose. Yes, take a pose, guys. Please take a pose. Take a pose means when you speak English, do not think like, "Oh, yes, guys, I'm gonna share with in this video some tips and tricks." This no, we don't have to learn a, we don't have to drive a car. No, we have to like smoothly, धीरे धीरे बोलिए। आपका स्पोकन इंग्लिश उतार चढ़ाव होना चाहिए, ना कि एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, उतार चढ़ाव होना चाहिए बोलते टाइम, बहुत अच्छा लगेगा। टेक अ पोज, टेक अ पोज, वाई आई एम, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। व्हेन यू स्पीक टू टेकिंग पोज, इट्स लुक लाइक क्लासिक। जब आप थोड़ा सा पोज करके बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, सोच सोच कर बोलते हैं, तो आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत बढ़िया लगता है देखने में, कोई भी सुनना चाहेगा आपका आवाज़ को। मैंने 6 पॉइंट ही लिया था, बट 2 पॉइंट और मैं ऐड करूँगी, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। 7 पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज स्मूथली बोलिए, थोड़ा सा भाषा को अपना एक्सरसाइज कीजिए, गला का एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका आवाज़ मीठा निकलेगा, आपका आवाज़ बहुत ही बढ़िया निकलेगा, आपका स्पोकन इंग्लिश और अच्छा लगेगा। आप एक्सरसाइज में कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, 5 मिनट कम से कम, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट तो कीजिए ही इसको। इससे क्या होगा कि आपका माउथ का एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज होगा तो आप कोई भी वर्ड ईजिली बोल सकते हैं। 7 टिप्स इज दैट टू एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज, ऑलवेज डू एक्सरसाइज। यू कैन हम गाइज, गाना गुनगुनाइए, गाना भी गुनगुनाएंगे तो आपका कंठ का एक्सरसाइज होगा, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा, बिलीव मी, बहुत ही मदद मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड से 8 tips is that think in English, start to think in English। जब मैं पहली बार सीखना स्टार्ट की थी खुद से, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, मैंने यूट्यूब से सीखा है, अभी भी यूट्यूब से ही सीख रही हूँ, और कोई टीचर भी है जो मुझे सिखाते हैं, अभी भी सीखती हूँ मैं वहाँ पे। मैं ज़्यादा करके यूट्यूब से ही मैंने सीखा है। यूट्यूब इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑल ऑफ अस, बिलीव मी। If someone asks who is your best friend, say YouTube and Google. This kind of application is really the best friend for all of us. So, 8 tips is that start to think in English. Yes, start to think in English. It will help you a lot, because when I was when I started to learn spoken English, I used to think, मैं जब बर्तन भी घसती थी ना, तो मैं इंग्लिश में सोचती थी, इसको क्या बोलूँ इंग्लिश में, इसको घसने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको धोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड टू डू। सो यू ऑल्सो डू। मीट यू अगेन गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, जितना हो सकता है इसको फैलाइए, और बस ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज, फॉर टिप। Thank you. Meet you again, guys. Be take care of yourself and keep learning.